Good evening, everyone. Before I start talking on the live, it's a good idea to center yourself. Take a few deep breaths. Inhaling all the love in and exhaling all that is not serving you right now. Exhale all the fears. Exhale all the resistance. A big hi to my followers. I'm waiting for more people to join us before I start sharing what I know of love and relationships. Good to see you too. So what is the Friday evening looking like? Is it a good end to the week? Is it a good end to your week? Or is it just creating restlessness? If it is creating restlessness, my dear friend, you're at the right place at the right time. Just remember that. Maybe the time hasn't come yet. If you're thinking that this is not where you want to be, so allow yourself to be free of the fears, to be free of the anxiety, to be free of resistance. Feeling stuck. We all feel stuck at times. It is just that we need to understand that where is the feeling coming from? And that is precisely what I intend to talk about today. When you and me are two people, we are this body, we are a soul, but we are also a mind and a heart. So there's a body, there's a soul, and in between we have this mind and we have a heart. You might ask me, how's the soul different from the heart? There's a lot of difference. The soul has no feelings. It is all created by this heart, which has a memory, which is tainted from your thoughts, which are created in the mind. So ये दिमाग और ये दिल आपके और आपकी आत्मा के बीच में एक पर्दे की तरह है। जब आप अपने दिमाग और अपने दिल को समझ जाते हैं तो आपके लिए अपनी आत्मा से जीना आसान हो जाता है, है कि नहीं? So let's think about, or let's talk about, what is the mind component here? The mind component are the thoughts which are
all the thoughts that you have are magnetic in nature. And all the feelings that you have are electric in nature. And together, the feelings and the thoughts, they create this curtain between you and your soul. So अपनी आत्मा तक पहुंचने के लिए आपको इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को समझना, जो कि आपकी ऑरा बन जाता है, जो कि आपकी एनर्जी बन जाता है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको। जब एक बच्चा पैदा होता है, क्या उसके दिमाग में कोई वैल्यूज़, कोई बिलीव्स, कोई जजमेंट्स होते हैं? नहीं। जब वो बच्चा 1 साल का होता है, तब भी वो बिल्कुल इनोसेंट होता है, विदाउट एनी थॉट्स और बिलीव्स, without any value system, without any ideas about the world. But by the age of 5, 6, the child borrows the ideas from the world around him or her. वो ये मानने लगता है वो एक इंडियन है, वो ये मानने लगता है कि वो हिंदू है या सिख है, वो ये मानने लगता है वो काला है या गोरा है। So ये सारा value system, ये सारे beliefs, they are borrowed by being in the world. When you're born, you don't have any of them. You're completely free of these labels and judgments, and also free of the burden of values, beliefs, ideas. And as we grow, वो बच्चा अपनी आत्मा के विचारों से, भावों से अलग महसूस करता है इन सारे वैल्यूज़ और बिलीव्स को। एंड दैट इज़ हाउ द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स। एवरी सोल हैज़ अ प्लान विद विच यू बोर्न ऑन द प्लैनेट, मगर वो प्लान आपको पता है, आपके अंतर मन को पता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है, बट आपके कॉन्शियस माइंड को नहीं पता। सो द जर्नी देन स्टार्ट्स टू गो इनसाइड। जब वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है तो आप अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। आप उन आंसर्स को ढूंढने के लिए एक इनर जर्नी स्टार्ट करते हैं, वेयर देयर आर नो बिलीव्स, देयर आर नो वैल्यूज, देयर आर नो जजमेंट्स, एवरीथिंग इज कलरलेस। मगर उस जर्नी के दौरान आपके संगी साथी आपकी फीलिंग्स और आपके थॉट्स हैं। एंड दैट्स हाउ व्हेन यू स्टार्ट अ स्पिरिचुअल जर्नी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेयर योर फीलिंग्स कम फ्रॉम, वेयर योर थॉट्स कम फ्रॉम, एंड इन बिटवीन these feelings and thoughts, which are your own, which is your personal experience, you're also interacting with the other people around you. You're creating relationships every day with every small single interaction that you're having with anyone, and also with your intimate people. You're generating a higher electromagnetic field through your feelings and thoughts. So, if you take care in step number 1 of the field which is created in interaction with the other, मुझे लगता है थोड़ा सा बैगेज हल्का हो जाएगा। अगर आप ये समझ जाएंगे कि जो फीलिंग्स आपको बाहर से अंदर आ रही हैं, उनका क्या मतलब है और उनको कैसे फिल्टर करना है, और कौन सी थॉट्स आपकी एनवायरनमेंट के कारण जनरेट हो रही हैं, अगर आप उनको कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो शायद ये जर्नी जो आपके अंतर मन की तरफ है वो आसान हो जाएगी। Isn't it? Amrita says, I need to meet you. Sure, love. You just need to send me a DM. We'll fix up the time and see each other. So coming back,
कि हम अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को जो कि हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में जनरेट होते हैं उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं. This beautiful book which I read, 4 Agreements by Don Miguel Rees, the Spanish name, not very well on my tongue, but the book is. So the book is about the 4 agreements that you can make with yourself to have, if not the best interpersonal relationships, but definitely better interpersonal relationships. First is not to assume anything. कभी भी किसी से बात करते हुए अपनी जजमेंट्स को बीच में मत लाइए. अपनी assumptions को जो कि आपके सेट वैल्यू सिस्टम और बोरोड बिलीफ से आ रहा है उसको बीच में मत लाइए. कोई आपसे कुछ कह रहा है, एक बार अपने आप को साइड पे रख के उसकी बात सुने. The art of listening is not easy, but without that, the relationships are not possible. Only conflict is. मैं अक्सर कोट करती हूँ in my therapy sessions और in my counseling sessions that जब हम assumption का चश्मा पहनकर किसी सामने वाले से बात कर रहे होते हैं, ना तो हमें वो इंसान दिखाई देता है और ना ही वो हमसे बात कर पाता है. उस समय टेबल पर 2 लोग नहीं 4 लोग होते हैं. बिकॉज वो भी किसी और से बात कर रहे हैं, आप किसी और की बात सुन रहे हैं. सो मेक इट सिंपल. रिमूव द ग्लासेस ऑफ assumption. Remove the glasses of judgment and just listen with the ears of your soul. Look at the person with your heart, not your eyes. I'm sure जब आप किसी के साथ टेबल पर बैठते हैं उनकी कोई बात सुनने के लिए तो आप उनको समझना चाहते हैं, नहीं तो आप अपना टाइम उनको क्यों देंगे. So अगर आप अपना टाइम दे ही रहे हैं, so might as well remove the glasses of assumption. Isn't it logical? So the first agreement is not to assume. Not to assume in any situation in front of you. Get curious. Ask questions. Whenever there is somebody in front of you who's posing a question that is challenging you, that is triggering you, ask yourself, why is it triggering you? First ask yourself that question and then get curious. Ask the other person, why did they ask that question? Because many a times आप ट्रिगर हो जाते हैं, तभी सामने वाला कहता है मेरी बात का मतलब वो नहीं था. तो कितना आसान हो जाए अगर आप पहले ही पूछ लें आपकी बात का क्या मतलब है. So the relationships become easy when you're not assuming. The second agreement is not taking anything personally. Now, what does this mean? Whenever you are in an interaction with somebody else, जब भी आप किसी और से बात कर रहे हैं, वो आपको कुछ कहते हैं, आप उसको पर्सनली मत लीजिए. इस बात को समझने के लिए आपको एम्पैथी का ध्यान रखना पड़ेगा. दूसरे के शूज में जाकर आप देखें उनके व्यू पॉइंट को कि वो अगर कोई बात कह रहे हैं, मे बी दे आर हर्ट, मे बी दे आर एंग्री, maybe they had a bad day at work. So not everything the other person is saying is about you. कभी कभी ऐसा होता है आप भी नाराज होते हैं किसी और की बात पे और वो गुस्सा किसी और पे निकालते हैं. उस समय कितना अच्छा लगेगा ना जब सामने वाला आपको कहेगा कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, यू मस्ट हैव हैड अ बैड डे. So try
and have empathy in your interpersonal relationships. It doesn't come easy, but it can be cultivated. The third agreement is being authentic. अक्सर लोग झूठे वादे, झूठे प्रॉमिसेस कर रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं. अपने बियॉन्ड वो दूसरे को कमिट करते हैं. बट दैट डजंट सर्व यू इन द लॉन्ग रन, or does it? So being authentic is a very important idea to manage your interpersonal relationships. Being true to your word, कि जो आपने कहा वो आप करेंगे और आप वही कहेंगे जो आप कर सकते हैं. So the third agreement is being authentic. That makes you trustworthy. दूसरे को आप पे विश्वास करना, आपको प्यार करना आसान हो जाता है जब आप प्रेडिक्टेबल होते. I hope that makes sense. Send me hearts if you all are listening. And the fourth agreement is giving your 100%. In any given situation, in a relationship with the other person or even with yourself, you decide to give your 100%. जब आप किसी सिचुएशन में, किसी रिलेशनशिप में अपना 100% देते हैं, तो एक चीज़ है जो आपको छोड़ देती है, और वो चीज़ है मलाल, वो चीज़ है रिग्रेट. आपको कोई रिग्रेट नहीं होता फिर. You can then sleep peacefully thinking कि आपके बस में जो था वो आपने किया. मगर इस पर यह सवाल करना ज़रूरी है कि अक्सर हम अधूरे मन से क्यों करते हैं. उस समय मैं कहूँगी, अपने आप से पूछिए कि आपको वाकई में ये चाहिए. Be true to yourself. Be true in your intentions. And only then you will be able to deliver your 100%. Otherwise, you're wasting your time and you're wasting the other person's time too. And this is not only in case of romantic relationships. This is also in case of people that you simply meet on the road. Give your 100%. Be that person who's truly authentic, who's truly present, who's truly aware. So these 4 agreements of not taking anything personally, of being true in your complete presence, of being 100% in your effort, and the most important one, not assuming, not judging. This will help you reduce the weight of feelings and thoughts which are coming from the relationships around you. And then only you can start that journey towards your soul. और जब आप इन चारों वादों को अपने साथ पक्की तरह से जमा लेते हैं कि मैं अज्यूम नहीं करूँगी, मैं कोई चीज़ पर्सनली नहीं लूँगी, मैं हमेशा अपना 100% दूंगी, और मैं हमेशा वो कहूँगी जो मैं करूँगी, और मैं वही करूँगी जो मैं कहूँगी, then I'm sure your relationships will improve. Your relationships will give you the room to work on your inner relationship, जो सबसे important relationship है आपका आपके साथ. Now I'm open to questions if anybody has any. You can type it in the comments, I can answer it in the live, or you can reach out to me in the DMs. And before we close the live, I would like to do a tarot reading for the audience here. Let's see what the relationship quotient
for the audiences right now. Okay. The card says control. It's a beautiful card and tells a lot about how we all are in our relationships, isn't it? We want to control the outcome. We want to control how the other person is behaving. We want to control how the other person is feeling. मगर मैं कहती हूँ किसी और को कंट्रोल करने की बजाय क्यों ना हम कंट्रोल खुद को करें, अपने रिएक्शंस को रिस्पॉन्सेस में बदलें। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में क्या फ़र्क होता है? रिएक्शन वो होता है जिसके बाहर आने से पहले 5 सेकंड का पॉज नहीं होता। It's as simple as that. So take a 5-second pause whenever you're in a situation which is triggering you. And only then you will be able to respond and not react. Before I close the live, I would like to say that in any relationship, remember the word collaboration. When you work with the other person who is equally interested in you, who is equally interested in making a relationship work, then there will be no conflicts. You can actually go up to them and tell them how you feel about things, how you feel about them. But before doing that, you have to check your intention. What is that you really want? Because firstly, it starts from you. We all are so worried about the other person in the relationship, but we should be worried about our own mind and heart first. How we truly feel and think about the other person. Only then you will be able to give what you feel and think. Nahin to they all are ideas of how you should feel and how you should think. So I'm going to start a self-awareness meditation cycle for 21 days. It's going to be based out of Zoom. If you're interested, you can write to me. I will have you registered. It would be a 15-minute session every day through Zoom, where we will be interacting, finding out more about the person inside us. How's that? Till the next time I see you, stay grounded, stay in love and light.